few days before his death, Ajay Singh came to meet me. He was at the time writing his autobiography and told me that he had finished the first two chapters. I told him that he should put everything aside and concentrate on finishing his autobiography. Ajay came from a prominent Western UP Jat family. He had an engaging personality. He had a large number of friends and admirers. He was an excellent journalist, a very good writer. He did extremely well at the university and was a student at St. Stephen's College. He was a public spirited individual and a successful politician. He was elected to the Lok Sabha and was Minister of State for Railways. His wife Shiromani died 3 years ago. Ajay never got over her death. His going away will leave an empty place in the lives of his friends and admirers. I shall of course miss him, but his memory will endure.
daughters once say of a friend who I've known for something like 55 years. We met in the final years of school when Ajay was the big sports hero and everybody looked up to him. And he was the complete opposite of me. He was a sports person, not particularly interested in his studies. He was one of the earliest people who started smoking a cigarette in school and to run around on a Vespa scooter when we would come on a bicycle, and we were the goody children. And I think a great friendship and attraction was because we represented completely different poles. I was the good boy and he was the bad boy, but the truth was that Ajay was actually a very good boy. He was clearly misunderstood by many people, but when we look back upon his life and people say that he had no enemies, it means that he had qualities which he flaunted, and they were deeper, warmer, generous qualities which he contained within himself.
कहीं न भेद पायो 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 ढूंढ ली मेरा पल में कहीं न भेद पायो गोकुल में जन्म लिया गोकुल में जन्म लिया गोकुल में जन्म लिया मेरो मुरली वाला तोरे बिना गोकुल में जन्म लिया गोकुल में जन्म लिया मेरो मुरली वाला तोरे बिना मेरे मित्र, राजनीतिक साथी और मेरे परिवार के सदस्य, अजय सिंह की मृत्यु ने इन पूरे 3 महीनों में जो सबसे बड़ी घटना हमारे जीवन में घटी है वो भाई अजय सिंह का जाना है। मेरे उनसे 40 साल से पुराने पारिवारिक रिश्ते थे, राजनीतिक रिश्ते भी थे, व्यक्तिगत भी थे, सामाजिक भी थे, आइडियोलॉजिकल भी थे। उनके पिताश्री भी मेरे प्रिय पात्र रहे हैं। श्रीमती शिरोमणि से भी पारिवारिक रिश्ता रहा है, लेकिन अजय सिंह का ऐसे में अचानक चले जाना हमको अंदर तक हिला गया। और वो राजनीति के लिए बने भी नहीं थे। ही वॉज टू जेंटलमैन टू बी इन पॉलिटिक्स। 1980 से लगातार अब तक मेरा उनसे निरंतर संपर्क रहा। हमारे और उनके दोनों के बीच की जो सबसे मजबूत कड़ी थी वो हम दोनों के नेता चौधरी चरण सिंह थे। 1980 में उन्होंने चौधरी चरण सिंह के आग्रह पर, निर्देश पर असली भारत ज्वाइन किया। वो किसान ट्रस्ट के भी मैनेजिंग ट्रस्टी बने और असली भारत के संपादक भी। यद्यपि उससे पहले उनका बहुत बड़ा कैरियर जर्नलिज्म में उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वो फ्रंटलाइन, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, न्यूजीलैंड टाइम्स आदि अखबारों से, समाचार पत्रों से जुड़े हुए थे। चौधरी चरण सिंह के साथ काम करने का मतलब पैसा और प्रतिष्ठा नहीं थी, सिर्फ ग्रामीण भारत को समझना, असली भारत को समझना और उन संदेशों को उस लुटे पुटे हिंदुस्तान के गरीब आदमी के पास तक पहुंचाना था, जिसकी चौधरी चरण सिंह हिमायत और वकालत करते थे। मेरा उनका लगभग रोज का संपर्क था। हम लोग रोज मिलते थे, अपने व्यूज एक्सचेंज करते थे। 89 में हम दोनों पार्लियामेंट में साथ आए। उनको उनकी जॉर्ज फर्नांडीज से भी उतनी ही करीबीपन था और जॉर्ज साहब ने निजी तौर पर उनको अपने रेल मंत्रालय में रखा, अपने जूनियर मंत्री के रूप में। वीपी सिंह जी के भी वो बहुत लाडले थे। यद्यपि वैचारिक प्रतिबद्धता के चलते उनके कई तरह के मतभेद हो सकते थे, लेकिन उसको वो अपनी निजी जिंदगी में कभी नहीं उतारते थे। मुझे कोई लगा नहीं है कि कोई व्यक्ति उनसे अलग होकर के उनके लिए कटु शब्दों का इस्तेमाल करता हो या उनकी कटु आलोचना करता हो। ऐसे समय में शिरोमणि भाभी का चले जाना लगता था जैसे उनकी ज़िंदगी के सारे चमन उजड़ गए हैं। वो उनकी पत्नी नहीं थी, उनके जीवन की डोर थी। और उसके बाद वो लगभग टूट गए थे। जब मैं घर पे पहुंचा था शिरोमणि भाभी की अंतिम यात्रा के दिन, तो मुझे लगता था कि इस सदमे को बहुत लंबे समय तक झेलने की उनकी क्षमता नहीं है। अब हम दोनों इकट्ठे एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। वो हम दोनों अपने अपने राजनीतिक अनुभवों को समेट करके एक किताब की शक्ल देना चाहते थे। वो हिज एक्सपेरिमेंट विद द टू प्राइम मिनिस्टर चरण सिंह एंड वीपी सिंह पर लेख लिख रहे थे। हम
अभी उनकी मृत्यु से 4-5 दिन पहले तक दिन में कई बार वार्ता करते थे। कुछ अछूते रह गए जो अनुभव हैं उनको साझा करने के लिए। वो यात्रा अधूरी रह गई। दोस्त चला गया, भाई चला गया, प्रियजन चला गया, और जो एक सुनहरी दुनिया, नया भारत, अच्छा भारत, असली भारत बनाने के जो चौधरी चरण सिंह के सपने हम दोनों ने अपनी युवावस्था में देखे थे, वो भी लगभग अधूरे रह गए। मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूँ। उनका एक स्वच्छ राजनीतिक जीवन रहा और निजी जिंदगी में भी वो अपने परिवार और मित्रों के लिए इतने वफादार रहे कि पिछले 15 दिन से दिन में कई मित्रों के फ़ोन कष्ट भरे दिनों के संस्मरणों को याद करके आंखें नम करने के लिए कहा। नैना मोरे, 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 तोरी रात कतत है, नैना मोरे, नैना मोरे, अरे नैना मोरे, नैना मोरे, अरे नैना मोरे, नैना मोरे, तोरे नाम मोरे, नैना मोरे, नैना मोरे, नैना मोरे, तोरी रात कतत है, अरे अयो अयो तब तुम बालो, नैना मोरे, तोरी रात अयो अयो तब तुम बालो, नैना मोरे, This is something that I wrote down thinking about his nieces and nephews and the younger generation in general, who he had a big impact on. He meant a lot to the family. Just anyone who I met would just cheer up talking about Ajay Mama and telling about the stories that when they traveled together with him or spent some time with him. I remember a time when I visited Ravi Mama in Upper Assam. He was working at a tea estate, and during that visit, he would regale me with stories about Ajay Mama and Ravi Mama uh, in their youthful years and all the wonderful things that they did together. Uh, I mean, his charm and warmth was so much that people were attracted to him, and he kept up with his friendships and with the family. Uh, and that warmth of those relationships flowed on to us, the younger generation, as well. Uh, he used to show so much genuine interest in everyone's lives. He would ask about, what one is doing, and he was very quick to pick up on any sort of trouble that was brewing in our minds, and in his rich and measured words, he would give some gentle advice, and just hearing him speak that way, would just half the troubles would melt away for us. Um, but he was also someone who had a lot of had a sense of fun and mischief about him. I remember he would say "Bacha bacha Ram ka kya program hai sham ka," and that was his cheeky way of saying, what's the evening plan. And as soon as you heard it, we knew that he's up for some fun, and the Bacha party was in charge of you know, leading him on. But as we grew up, we got to see Ajay Mama more and more. In his study in Gurgaon, he would be found either reading or writing or working on some other project. His latest projects, whatever. And when we went there, he would pour us a drink, and
say cheers to us in Aussie slang, and none of us could really understand what that meant, but he would laugh at our expense and have his fun. These are the stories that will remind us of how big part of our lives he was, and we will cherish these stories for a long time to come. And to Mamaji, just want to say farewell, Mamaji. We will miss you. We'll miss that handsome smile and your witty stories.
सलीम चिश्ती मौला सलीम चिश्ती आका सलीम चिश्ती मौला सलीम चिश्ती आका सलीम चिश्ती आका सलीम आहे सलीम चिश्ती मौला सलीम चिश्ती आका सलीम चिश्ती मौला सलीम चिश्ती आका सलीम मौला सलीम चिश्ती आका सलीम चिश्ती मौला सलीम चिश्ती आका सलीम चिश्ती मौला सलीम चिश्ती आका सलीम जितनी बलाएं आई सबको गले लगाया जितनी बलाएं आई जितनी बलाएं आई सबको गले लगाया जितनी बलाएं आई जितनी बलाएं आई सबको गले लगाया हो गया कलेजा शिकवा न लब पे आया हो गया कलेजा शिकवा न लब पे आया हर दर्द हमने अपना अपने से भी छुपाया दर्द हमने अपने से भी छुपाया भाई अजय सिंह जी का असमय छोड़कर चले जाना हम लोगों का व्यक्तिगत, समाज का और देश का नुकसान है। श्री अजय सिंह जी बहुत पढ़े लिखे, प्रबुद्ध और विद्वान थे और वो बहुत ही श्रेष्ठ और विनम्र थे। वो किसानों में विद्वान और विद्वानों में किसान थे। अब उस तरह के लोग नहीं रह गए। जीवन में कभी उन्होंने किसी को आहत नहीं किया। हर समय मुस्कुराते रहना और सब मित्रों की सलामती चाहना उनके विशेष गुण थे। सरकार में रहते हुए भी वो वैसे ही थे जैसे सरकार से बाहर रहते हुए। घमंड उन्हें छू नहीं गया था। मेरा तो उनसे व्यक्तिगत बहुत अच्छा संबंध था। उनका न रहना मेरा व्यक्तिगत नुकसान है। अभी उनसे समाज को बहुत उम्मीदें थी और वो आखिरी दिनों में बीमार रहने के बावजूद बहुत सक्रिय थे, लेकिन होनी के सामने किसी का बस नहीं चलता। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे तथा उनके परिवार के लोगों को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। भटके हुए मुसाफिर मंदिर पे पहुंचे आखिर। भटके हुए मुसाफिर अरे कुछ जाम से भीगे, कुछ मेहरबान नजर से ये सबके दर तुम्हारा अरे तोड़ेंगे अपने सर से। सबके दर तुम्हारा तोड़ेंगे
अरे नाम जानू आरती बंदन लो पूजा की नाम जानू आरती बंदन ला पूजा की मैल जानी दरस दीवानी पागल मोरी प्रीत एरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को एरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को I have lost a very close friend and a valued political colleague. Since 1980 or so, we have been associated, and sometimes we have worked in the same political party, sometimes different parties. We were always on the same page as far as the country's strategy for social transformation. Ajay has been a very, very thinking, and Ajay Singh has been very helpful in helping us think more clearly how to help the poor with policies which can help ameliorate their conditions. Shiro Mani, his wife, died a little while ago. After that, he has been very depressed or out of sorts. But 2-3 months ago, in Delhi, one evening he had come to my house with Professor Mahavir Singh and another Mr. Sharma. And they spent a whole evening together, and I found Ajay definitely in better spirits. He rang me up during this lockdown and told me they're looking forward to my visit to Delhi when we shall again get together. It was not to be. He had had a good career, a clean image, and everybody who knew him would miss him as a thorough gentleman. He was, of course, also elected as president of the All India Jat Mahasabha, and I used to always take a dig at him, calling him Pradhan Sahab. Only memories will remain, but I will always cherish Ajay Singh, memories, time spent with him, politics that we did together, and the good times that we had over the years. में तो
I have a 4th-generation relationship with Fiji. My great-grandparents went to Fiji in 1885 as indentured laborers. My grandfather was born there 1888, and they returned to India. Then my grandfather went back. He was amongst the first
group of Indians taken into the civil service there, and he served for about 17 years in the service and then returned to India. My father, who was born in India, joined the civil service, and after retiring from the civil service, he was the first Indian High Commissioner posted to Fiji after Fiji became independent, and he was there for about 5 years, little over 5 years. As far as I'm concerned, my background is in journalism. I worked in India as one of the editors in Hindustan Times. I worked for India Today. Then I moved on to politics. I was in the Legislative Council of Uttar Pradesh, then elected as Member of Parliament from Agra, where my ancestral village is. I was a member of the Council of Ministers, Junior Minister for Railways, and then later on as the High Commissioner of India in Fiji. So, आखिर
तलखात मिलेगा, ये तलखात मिलेगा, ये तलखात मिलेगा। आखिर ये तलखात मिलेगा रे मिलेगा तलखात मिलेगा, तलखात मिलेगा। आखिर ये तलखात मिलेगा। ये काहे फिरे मगरूरी में मल्ला रो यार कबीरी में, मल्ला रो यार कबीरी में। आखिर ये तलखात मिलेगा, तलखात मिलेगा, ये तलखात मिलेगा, ये तलखात मिलेगा, ये तलखात मिलेगा, ये तलखात मिलेगा। कोई आए कोई जाए ये तमाशा क्या है, कोई आए कोई जाए ये तमाशा क्या है। कुछ समझ में नहीं आता कि ये दुनिया क्या है, कुछ समझ में नहीं आता ये दुनिया क्या है। तेरे अहबाब तेरे दोस्त तेरे घर वाले, तेरे अहबाब तेरे दोस्त तेरे घर वाले तुझको मिट्टी में मिला देंगे, समझता क्या है, तुझको मिट्टी में मिला देंगे, समझता क्या है। दफन करके ये तसल्ली भी दिए जाते हैं, दफन करके ये तसल्ली भी दिए जाते हैं। अग्नि दे के ये तसल्ली भी दिए जाते हैं, अग्नि दे के ये तसल्ली भी दिए जाते हैं। रफ्ता रफ्ता सभी आ जाएंगे, डरता क्या है। आखिर ये तलखात मिलेगा, आखिर ये तलखात मिलेगा। अरे काहे फिरत मजरूरी में मल्ला रो यार, ये काहे फिरे मगरूरी में मल्ला रो यार, Ajay Singh had many interests and many talents, but he had a special connect to journalism, which I do believe was his first love. He was involved in the profession from fairly early on after finishing his postgraduate studies in journalism from Canterbury University in Christchurch, New Zealand in 1974. Having done a stint as senior sub-editor in Fiji Times in Fiji, where his father Bhagwan Singh was posted as the Indian High Commissioner, he returned in late 1976 to India, which was of course at that time under emergency. A brief sojourn in Maneka Gandhi's Surya magazine was followed by a key role in the revamp of India Today news magazine as its news editor in an exciting era of investigative journalism in the aftermath of the emergency. Ajay will be remembered for his outstanding investigative pioneering reportage of the Northeast. This was what began his close friendship with Mizo rebel leader Lal Denga. He later joined as deputy editor of the new English tabloid Morning Echo, launched by the Hindustan Times Group in Delhi. Indeed, Ajay's free spirit had a particular preference for new and up-and-coming publications rather than old established ones.
In his last weeks, Ajay was full of plans and ideas. He was excited and energized about writing his memoirs. He was calling up friends, discussing different chapters, checking dates, researching facts, and getting organized. In one of his conversations to me, Ajay said, "I'm on a roll. I'm going to sit through the night writing today." That was Ajay in his last week. Ajay cherished his friendships and associations. He remained engaged and connected with them throughout his life. I would like to thank all those people, his friends, family, colleagues and supporters who enriched his life in many ways. Thank you and namaste.